So formation of tropical cyclones, how tropical cyclone moves, then how they are predicting the tropical cyclone, all this region. Then some keyword of the tropical cyclone like the landfall, etc. Some keywords associated with the tropical cyclone that we will daily news रे आमे जेमते सुनो ना cyclones तो प्रत्येक वर्ष formation होउची. Now this is also time for the cyclone formation. A tropical cyclone, what is this? प्रथम कथा ये होची गोटे सिस्टम, ये होची साइक्लोनिक सिस्टम. Or disturbance. Okay, that means हमको ये होची गोटे cyclonic system टा develop करे over the sea surface. है ना, then समझ को tropical cyclone is a cyclonic system. है ना, independent cyclonic system. ये कौन है? Independent. Independent cyclonic system. Then voice asuni. Voice is not coming. What happens? Okay. Now it's fine. Thank you. A tropical cyclone. Tropical cyclone, first time देखिए tropical, then cyclone. Tropical means in the tropic region like 23½ and the 23½. So tropical cyclones found in this part of the world. A part of तुमको देखा जो 23½ and 23½. Okay. This region is dominant. है ना? This could be up to 25, 27 latitude ही परे. But it should be within the 30 degree भितर रहेगा. तेणु आपको कहा जाए tropical. Then what is the meaning of cyclone? Cyclone simple एक होगा cyclonic storm. ये गोटे होची cyclonic storm. Okay. Independent cyclonic storm. Then it's an independent cyclonic storm. That means it does not means दुईटा तीनटा cyclone गोटे मिसिकी बुझी पड़तम तो large system develop करो. It's a single system. Fine. It's a single system working. Okay, fine. Tropical cyclone जानी रे tropical cyclone कोटी formation हुई ना formation आगे हमें देखिए आरो seasons of tropical cyclones. So we will move to the tropical cyclone slide because the summer and winter season we have wrapped up. And this would be your tropical cyclones. The cyclone looks like this. Okay, got a circular band of air तुमको देखा जो from the over air and cloud. So tropical cyclone कोटी formation हुई, it will all obviously no doubt form above the water surface. So वाले ध्यान से मन कहबो ये water surface ऊपर ही formation हबो, land ऊपर formation हुए नहीं. But when it comes to the temperate cyclone, that forms over the both surface. That means both water and land. जो extra tropical cyclone जाको temperate cyclone कहा जाए. Temperate cyclone forms over both, that is the land part and water part. Okay, we were going through we were going through what? A western disturbance, isn't it? Mani chena samastangaro western disturbance. कौन गला बनने के हारबी पढ़ाई छे ना पढ़ाई नहीं बस एती कह दियो ना पढ़ाई छे ना कौन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस it's a winter rain due to the extra tropical cyclone कहतली Caspian Sea, Black Sea, Central Asia,
then Mediterranean Sea this region रे जो tropical जो तुम extra tropical cyclone develop करिवो ताल तार impact इंडिया रे पड़िवो को region रे like पंजाब हरियाणा राजस्थान यूपी उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश जे&के ए region रे कोटी कोटी precipitation that means experience करा जाए. Let's say some region will experience rainfall, some region will have snowfall. କହିଥିଲି ନା ଆମେ last class ରେ पढ़ी नथिली है ना. So tropical cyclone जो तुम देखियो, let's say this is our beloved country and 0 degree, this would be your 0 degree. So India latitude extends na hochi mainland 8 degree and जति हमें India देखिबा 6 degree, that is the जोटा पिगमाइल पॉइंट कहउछो है ना. तो ये रहबो हमरा अंडमान सी, दिस रीजन अंडमान निकोबार एंड दिस इज द अंडमान सी. एपट ईस्टर्न साइड रहबो एटा हला बे ऑफ बंगाल. अंडमान निकोबार रो ईस्टर्न साइड ता रहबो अंडमान सी. ना ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडिया रे ज्यादातर कोठी फॉर्मेशन हुए अंडमान सी रे हुए. आंसर मन रखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन ज्यादातर इंडिया रे कोठी फॉर्मेशन हुए अंडमान सी दिस पार्ट. ओके कारण एपट रहबो तोर की मालयेशिया, एपट अछि मालयेशिया, एपट रहबो तोर बे ऑफ बंगाल, ये रहबो तोर अंडमान सी. अंडमान सी रे अधिक हुए आउ कोठी फॉर्मेशन हुए दिस रीजन लक्षद्वीप. ए जो रीजन अछि ए दीटा रीजन जदि कहू पजे अधिक ट्रॉपिकल साइक्लोन कोठी फॉर्मेशन हुए हमर प्रथम होची एएनडी अंडमान निकोबार पाखरे सबटो अधिक फॉर्मेशन हुए. नेक्स्ट कम्स योर लक्षद्वीप. इफ इट अरेबियन सी देन इट विल बी योर लक्षद्वीप. Okay, then it's going to be Lakshadweep. It is if this one is let's say Bay of Bengal, then it's going to be Andaman and Nicobar. The genesis point will be like this, Andaman Sea formation hobo. The tropical cyclones hobole man rakho eastern part of the ocean ro eastern part of here. Like this one is the eastern part of the ocean, so here is forming. This one the Arabian Sea the eastern part, obviously this would be the eastern part of Arabian Sea, isn't it? So that means this region it will forms. From forming here it either moves like this or move like this है ना. तो एठी formation है कि it can move Myanmar, it can move to Bangladesh, it can move to Odisha like this. Andaman Nicobar formation hela pare. Hope the image is coming to all. So after formation tropical cyclone से कोठी के आसी परे ये देखि तले में कोठी कोठी tropical cyclone formation होची. That means tropical cyclones are mostly forms over the water surface. ध्यान से मन रखो, water surface is no land surface. तले water रे किछि एमिति हुए जो टाइम जोटा की water, that means तार गोटे particular condition दरकार. आगे हम देखिबा टाइम्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन. जदि हम देखिबा ट्रॉपिकल साइक्लोन रो टाइम्स पढितले तीनटा टाइम रे हुए से. मु गोटे कहितली प्री मानसून, वर्तमान प्री मानसूनल ट्रॉपिकल साइक्लोन हबो. देन आसबो तोर ड्यूरिंग मानसून and then as well post monsoon. The post monsoon tropical cyclones are the violent, the most devastated tropical cyclone formed in the post monsoon, or I would say when the northeast monsoon will be going on. When the northwest monsoon will be going on, that time if any kind of tropical cyclone is forming over the Bay of Bengal, that is going to be the most devastated. तारो region अछि है ना, बहुत सारा region अछि. tropical cyclone is a center of interest. भी हमें कहीं पर बहुत सारा meteorological those who have interest in meteorology and the climate जो उन्हें interest रखते, they will always go for the tropical cyclones to know about the all form of tropical cyclones, its nature, its characteristics, why it's forming, जहाँ भी हो. पहले तीनटा टाइम रे ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन हुए, प्री मानसून, ड्यूरिंग मानसून, पोस्ट मानसून. ना प्री मानसून खास करके तमरो मे मंथ रे अधिक हुए. मे एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम व्हाट मिड ऑफ मार्च. ध्यान से मन रखो, मिड ऑफ मार्च टू नहीं कि अप टू योर जून है ना. ए रहबो तमरो प्री मानसून. एंड साधारणतः मे मास रे जेमति तमरो फानी आस्तला, होप इट वाज आल्सो द मे मंथ. May or April, मतलब I have forward which month it was. I believe it could be like May month. फानी जो आस्तला. Then during the monsoon था, आ गोटे था तमरो post monsoon. Done. तो ये था तमरो season or the times of the tropical cyclone को हमें तीन भागों को ले ड्यूरेशन है ना. Then हम देखिए tropical cyclone both that is what which part formation होची. Here I will show you. Tropical cyclones are forming over this part and this part. This side India formation हुए.
and they will move like this. Here you can see June to November दिखाई, but exactly June to November no ता पूर्व हुए from the May, from March April, from the mid of what mid of March to नहीं जीवो up to the mid of November, December you could say है ना पूरा December जाए tropical cyclone formation हबो in this part of है ना एठी को आजे को tropical cyclone Indian Ocean रे को आजे tropical cyclone Atlantic रे this particular region रे रहिबो तमरो hurricane Western Pacific region रे ये रहिबो तमरो and South China Sea here would be typhoon एठी को कोन को आजे typhoon बुझ परछो नहीं जो South China Sea रे Australia रे को Willy Willy कहते here you can see the Willy Willy here it's known as the Willy Willy near Australia tropical cyclone को कहाजे Willy Willy है ना तो एमती किसी ना तुमको दिए जो local these are the regional names and ए जापान रे आपको बाइगेउ कहती ठीक है देखी देवो है ना so like this so that means हमें बुझी परिवार कि tropical cyclones हाँ वो सुमो कहती तुमको tropical cyclone है क्या तो आरो आमे देखितले इंडिया रे कोटी कोटी फॉर्मेशन होची एंड सो ये ट्रॉपिकल रीजन रे ही सब बळे थाए जा भी हो तो प्री मानसून ड्यूरिंग मानसून पोस्ट मानसून देखा जे जोटा पोस्ट मानसून हुए सेटा सबटु डेवास्टेटेड होई थाए अब नंबर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म्स post monsoon is more than the pre-monsoon or during monsoon. Again, I repeat, the number of tropical cyclone forms, their number would be more than the what I would say pre-monsoon and the post-monsoon or post-monsoonal tropical cyclone. तार reason कौन जानते तार reason होची October heat जो कथा में पढ़ी थले when I was going through your summer season and the winter season that time I was talking about the October heat as the monsoon retreats back in October the heat and the humidity released that holds the water body सही टाइम रे कोन हुए एटमॉस्फेयर टा काम था ग्रेजुअली विंड स्पीड धीरे धीरे कमी कमी जीवो है ना आउ सेटा हेल्प करे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन केमिति सेटा में देखिबा विंड रो जो शियर फोर्स थाए दैट शियर फोर्स ऑफ द विंड विल डिक्रीज एंड दैट विल लीड टू द इंक्रीज ऑफ द मोर ट्रॉपिकल साइक्लोन let's say the shear strength of the rock if that will decrease what will happen anyone सर लैंडस्लाइड लैंडस्लाइड्स बहुत बढ़िया ओके ताले ट्रॉपिकल साइक्लोन रे कोन देखले सीजन देखले कोटे फॉर्मेशन होचे नाउ डायरेक्शन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन let's say tropical cyclone is forming over the Bay of Bengal close to your what Lakshadweep so it will form close to the Lakshadweep so that means one thing is clear and this is ये पूरा क्लियर जे ट्रॉपिकल साइक्लोन सब बोले ईस्टर्न साइड रो ओरिजिन हुए लेट्स से अरेबियन सी रा ईस्टर्न पार्ट इज लक्षद्वीप and Bay of Bengal रा ईस्टर्न पार्ट is your Andaman Nicobar. Here you can see the tropical cyclone forms here which island is there anyone like Canary Island here is what Canary Island so from here it will move to the west so बोले east to formation है कि west को move करे tropical cyclone तार रीजन कौन कहि परबे एनीवन बिकॉज ऑफ द योर ईस्टर्ली विंड एमती जाउची तो विंड जेतरे हमरो so we were going through the what ITCZ is the meeting point of two different wind okay north east and southeast trade wind तो ए जो ITC रहला Z this ITCZ जोगो because of this what wind जो हमें जहाँ को हमें कहूँ trade wind because of that trade winds the tropical cyclone moves towards the east. Though this is not the sole factor, other factors are responsible. Movement कौन पाएंगे? Now, हमें जितना हमें कोचे tropical cyclone रो movement, the movement that is based on then यदि हमें देखा tropical cyclone नीचे से नीचे को drag करी पारे नहीं. The driving force कौन? Driving force is the wind. दांत समझ के बाद the prevailing wind. The prevailing wind is the driving force. The wind direction से समरे जुआड़े रहिबो tropical cyclone सियाड़े move करिबो. For example, let's the wind is coming from the east towards the west, then tropical cyclone will move also the same. So it's depend on the wind direction, केमिति wind direction अछि and the pressure system nearby region.
Okay, nearby region रे जो pressure system अच्छी, let's say nearby region is some region is having low pressure. So tropical cyclone is a what? Low pressure. Answer मन को tropical cyclone is a low pressure. ओके सो ट्रॉपिकल साइक्लोन कुआडे मूव करिवो से सबले आउ गोटे लो प्रेशर आड़ को मूव करिवो इट वुड नॉट और इट डज नॉट मूव टुवर्ड्स द हाई प्रेशर रीजन हाई प्रेशर आड़ को गले खत्म हे जबो कारण तुम जान हाई प्रेशर विंड कोन करे पुश करे आ ये कोन करे अट्रैक्ट करे हियर लो प्रेशर कोन हुए कन्वर्जेंस ऑफ द विंड and high pressure will have the divergence of the wind. Okay, hope this one is also known to you. ना जणा नै एटा काहकू already I पढ़ी सारी pressure system. So that means tropical cyclone which got a intense low pressure. Here the pressure now average नहीं जो pressure कहते 100,000 MB. That means let's say if I am writing like this, let's say 1002 or 1010 MB millibar. This indicates high pressure. तुम मोबाइल रे सकाळ उठिकी तुम देखिवो जे तमरो केते देखौची एमबी if it is more than 1000 that means indicating the high pressure. If that is coming down to 990 MB like that means the pressure is decreasing, it's going to the low pressure. मोबाइल रे तुम देखि परिबो. Okay, ये भी that means pressure गोटे एवरेज हम नो केते 1000 MB that put the average जब यो. So here that means the tropical cyclone it's a intense low pressure. You have to remember किछि जिंस जेतल मु कोए ना सेतल you have to write down yourself सही टाइम रो otherwise तुमको पुनी वीडियो आउ थरे देखिबो that would be a time consuming affair है ना. So it would be मतलब better to write down and jot down. It's no need to have a beautiful handwriting, the beautiful note. That beautiful would not come ever. बुझ पड़छ से beautiful चक्कर रे केबे भी नोट बना ही परिबो नहीं. तो से रफ हो पछे बनी दियो किसी ब्यूटीफुल दरकार नहीं बुझिपड़ वी नीड बट एटलिस्ट पढ़ेला बेले जो नोटा रही जो सेटा तुमको हेल्प करिवो देन देयर यू कैन डू द वैल्यू एडिशन आफ्टर हैविंग लेट्स से समथिंग इज लेफ्ट और यू वर नॉट एबल टू राइट डाउन देन लेटर ऑन वीडियो को तुम स्पीड अप करके देखि दे पारिवो. ओके अदरवाइज पुणी एबे 2 घंटा क्लास करिवो कि 1.5 घंटा पुणी आउ थरे 1.5 घंटा देखिवो 3 घंटा जीवो सेमथि हेले बहुत and that would not be a prudent बस जब you so tropical cyclones कोई देती कोई disturbance is an intense low pressure. Here winds are converging, that means the centripetal force. Obviously low pressure will attract the wind from the high pressure region. So tropical cyclone जो movement टा करे किमती move करे obviously towards the warm water. सबले ध्यान से मन को tropical cyclones warm water को जाए. So जहाँ भी हो ये slide देखिए दूँ जो obviously कोई भी नहीं है ना. Category of the tropical cyclone. Then what exactly the tropical cyclones going on? Here you can see tropical cyclone. Tropical cyclones are the violent storm. Obviously they are the intense low pressure area originate over the ocean, that means the water surface. Simple I will say the water surface, that would be water surface. Okay, so kouthi abo tropic region re I have already mentioned the tropic region re dekha jabo what within the 20 degree देखा जाए, that means 5 to 20 degree. ध्यान से मन को tropical cyclone forms 5 to 20 degree latitude है ना. 20 रो ऊपर को जीवनी कि 5 रो तळ को आसीबन. Okay, that is the reason where tropical cyclone exactly forms, but the striking point could be different. For example, let's say here and I will show you here. Let's say tropical cyclones. See the formation areas here. These are so tropical cyclone forms. So this region 0 to 5, let's say this would be 5, this would be 5. This region does not provide the condition for the formation of the tropical cyclone. So it formation habo nahi. ताले हम कहबा 5 to 20 degree. 20 degree this would be the area where the tropical cyclones will form. Chance mark of both hemisphere. Tropical cyclones forms 5 to 20 degree latitude. 0 to 5 both hemisphere of the equator, that would not provide any suitable condition or for the formation of tropical cyclone. Because of the lack of Coriolis force. So as this region does not have sufficient Coriolis force, I would say like Coriolis force to 80 कम थे almost 0.
Coriolis force सबले ध्यान से मन रखो इक्वेटर कम थाए मैक्सिमम थाए पोलर रीजन रे दैट इज लाइक if you are moving to 80 degree latitude 90 degree 70 degree etc so on and so forth as we move towards the higher latitude that is the Coriolis force the rate of deflection will increase hence tropical cyclone formation find the Coriolis force that is where 0 to 5 degree of the both the hemisphere does not provide that particular condition hence that region would not be the region for or the ground for the formation of tropical cyclone. So that is why I have mentioned here that is the 5 to 20 degree latitude is the best latitude for the formation of the tropical cyclone. Okay, brings about the large scale destruction due to the violent wind. The tropical cyclone obviously bring that what violent wind with the heavy rainfall, that is the copious rainfall, or I would say the copious rainfall. That copious rainfall, that means huge rainfall, and the storm surge as well. What exactly the meaning of storm surge? If you storm surge means जो बड़ा बड़ा ढेउ आसीबा जहाँ को हमें कहते waves. समुद्र कूल if let's say somebody is having their habitat in the seashore region, or if you are traveling in the seas of Puri, that times you would see that large waves are coming. है ना बड़ा बड़ा waves कमुची आसुची. That waves driven through the wind kind of wind friction jete बढ़िबो सेते तमे जानिचो waves रो जो मतलब height टा बढ़ी बढ़ी altitude टा that is also known as the storm surge. So flood भी ही जाय परे flood because of the storm surge either समुद्र पानी उठी आसीबो जाको हम storm surge कहउचे or जो rainfall होची intense rainfall that could also the water logging condition है भी flood देखा जाय परे. The both way a flood can be. Let's say the coastal region will have the sea water will comes into the land, or the interior part, let's say Katakubne, so this region will experience too much of rainfall. That will create or that might create the waterlogging condition in the urban region as well as the rural region as well. है ना तो हमको देखा जो फ्लड सिनारियो torrential rainfall will be received. Fine everyone. जार जोठी प्रॉब्लम रहबो you can ask me directly एठी बुझि परछनी. So they are irregular wind रो movement constant न थाए बुझि परछनी. So ये गोटे closed circulation थाए. Tropical cyclone is a closed circulation, it's like a coil है ना ये गोटे coil भले देखा जबो तुमको closed circulation and movement थाए fast movement थाए. Northern hemisphere ये केमती move करे anyone how it will move in northern hemisphere anti-clockwise move करिवो केमती anti-clockwise move करो. Let's say this is low pressure, the wind is moving like this, it would be deflect like this. Okay, so it would be that means anti-clockwise है ना नाइटा बुझा पड़िबन काहाको anti-clockwise रो केमती होची सिंपल हम कहबा Coriolis force कोन करे डिफ्लेक्ट कर दो. Let's say it's a low pressure wind एमती जिवा पिन चाहूचे किंतु आमे पढिथिले Coriolis force right को डिफ्लेक्ट कर दो. So it will deflect like this. एपट wind एमती आसे पिन चाहूतले सेम थी डिफ्लेक्ट हे जिवो एमती चाहूतले आडू को डिफ्लेक्ट हे जिवो. So finally the winds will move anti-clockwise. Southern hemisphere opposite clockwise move करिवो. Okay, what will the high pressure? High pressure जदि हम कहबा high pressure rotation एपटे केमती रहइबो anti clock जदि तमरो anti clockwise रहला low pressure ताले high pressure ता हिजो northern hemisphere clockwise. नाइटा बुझा पड़िबनी काहाकू केमती होची high pressure कले wind will try to move into the center है ना center को जतरा move करूची that would be rotate towards the what कोन हिजो right को है ना sorry ये rotate inward no outward sorry centripetal force ना ये centripetal force high pressure कोन करियो centripetal force ना है ना it will be wind will move away from the center will move away from the center and it would be rotate towards the right एमती जिवा पिन चाहूतला right एमती जिवा पिन चाहूतला right एमती जिवा पिन चाहूतला right so that circulation would be right. Okay, तो एमती deflect है कि कौन छु because of the deflection that is the Coriolis force is the main force for the anti-clockwise and clockwise. So high pressure in northern hemisphere obviously it would be clockwise and opposite would be the low pressure anti-clockwise. जाबियो storm surge बुझी गेलो tropical areas ये सब हमें कहि देले कोठी कोठी देखा होची closed circulation है ना air circulation टा कमती रहबो it would be like air will circulate like this. As a result the rapid upward movement of the hot air रहइबो
and that is the Coriolis force mu तुमको कहिछि subject to the Coriolis force. Coriolis force जोगु ये कोन करते rotate हेथे चारिपटे. Here you can see the structure of tropical cyclone. Then आमे condition को परि जिबा. Condition for the tropical cyclone. Here you can see the structure of tropical cyclone. Tropical cyclone ro empty like this, like this, like this. This is the eye, the center of tropical cyclone जाको कुहाजे eye. The center of tropical cyclone जाको कुहाजे eye. You might have heard several times. Eye होची center of tropical cyclone. ध्यान से मन को the center is the eye. Center होची eye. And this one है ना ये जो तुम देखो जो vertical structure. This is also ये गोटे wind and the cloud. आको कुहाजे eye wall. Eye चारिपटे जो fast and the fastest wind जोटा बुलुची ताको कुहाजे eye wall. Okay, that is the eye wall. That means हमें कहबा eye को घेरी की जो fastest wind सबले ध्यान से मन को fastest wind are found in this region. एटा गोटे सर्कुलर टा ताको हमें गोटे स्पेस रे कन्वर्ट करछन नले एटा 3D पिक्चर तो नो है ना. तो ए जो हमर साइड रे जो फास्ट फ्लोइंग विंड होची जे के आई को कवर अप करके रखिया आको कुहाजे आई वॉल. आको कुहाजे आई वॉल है ना. बोथ साइड रो आई वॉल होची. आई होची काम प्लेस पूरा काम. आंसर मन कहबो आई इज द काम स्पेस हमा बस प्लेस हम कहि परिबो. एटा पूरा काम थाए एंड इंटेंस लो प्रेशर. एटी सबुठु अधिक लो प्रेशर थाए आई रे. Okay, it's a closed system. I is a closed system. Pro एटा रेबो intense low pressure रहिबो आ warm water थाए आ तळे कोन थाए that is the severe warm water है ना. that means हमें एठी देखिबा तळे कोन थाए ना warm water थाए. जेमति एठी तमे देखि परिबो this large warm water is over that आई रे तळे पूरा large warm water रहिछि. आ ये water temperature कोन temperature is 27 degree है ना. So either it would be 26.5 degree or 27 degree. So साधारणतः यदि तमे if you are going through the Sabinder Singh book there it would be mentioned like 26.5. If you are going through the NCERT it will be like 27 degree and other materials रे 27 degree थाए. तो go for the 27 degree no problem. Okay, कारण एमिति ऑप्शन रे अथवा 26.5 27. So obviously most of the answer is 27 degree Celsius है ना. सेति पे 27 degree नहीं जो 25 को छाड़ दियो 27 राउंड फिगर है ना. दैट वुड बी वाटर टेम्परेचर जो रहला 27 degree Celsius जदि रहिला तादर कोन है जो दैट वुड बी द कंडीशन. जदि हम कंडीशन बहुत सारा कंडीशन अछि हम जिबा आगु को. तो सेंटर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन हो जे आई को चारिपटे रहइबो. ए जो तुमरो स्ट्रक्चर देखाउ जे वर्टिकल स्ट्रक्चर. This structure is eye wall and then again there would be the rising air. एटा को हम कहबा this would be the inner rain band. आको कहा जाय rain band. Just a minute. This would be the rain band. आको हम कहबा कोन rain band. Okay, ये रेबो rain band. This would be your rain band. Rain band means rain is causing in this region heavy rainfall. ये भी तुम्हारा rain band. This would be also rain band. आपको कहा जाए outer rain band. This would be outer. This would be inner rain band. ये like this one inner and this would be outer. ये रेबो आई को लगी कि रही आई वॉल. These are the आमे देखु छे स्ट्रक्चर रो तळ पार्ट टा. सेमति स्ट्रक्चर ऊपर पार्ट कोन रहबो मु तुमको कहितली तळे जदि तमर लो प्रेशर अछि ऊपर कोन रहबो हाई प्रेशर. सो दिस वुड बी हाई प्रेशर. ऑलरेडी कंडीशन मु पढैतली आगुरु कहि नथली आगुरु so many times I have said है ना that जदि if it's low pressure below then upper will have high pressure. High pressure wind को डाइवर्स करे low pressure wind को कन्वर्ट्स कराए. ओके फाइन ये तो जानि छे हमें. तो हियर डाइवर्जेंस ऑफ द एयर है ना. कूल एयर दैट मींस एटी कोन एयर टा कूल एयर हमको देखा जिवो and that cool air is moving away. ए जो मूविंग अवे हे कि जाउची these are the what clouds. ए होची हमरो क्लाउड सब देखा जाउची. Here would be the tail cloud. आपको कहा जाए tail cloud जोड़ा कि तमे let's say Andaman ocean रे or over the Andaman sea the tropical cyclone is forming and somebody is close to the Puri or Chennai or Visakhapatnam like this coastal region you are standing. So you would be able to see this or watch this cloud, this tail cloud. तेणु एम को कह टेल क्लाउड. ए टेल क्लाउड को एथरू भी जना पड़े कि ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन. दीज आर द इंडिकेटर्स. द टेल क्लाउड्स आर द indicators that a structure is being formed.
ओके तो आपको टेल क्लाउड भी हमें कहू दिज आर ज्यादातर साइरस थाए तुम साइरस क्लाउड थाए है ना जहाँ भी हो तो हमें टेल क्लाउड आपको कहुए कि जोटा कि तुम फॉर्मेशन होची तार पूरा लास्ट एंड हमको टेल क्लाउड देखा हियर वुड बी द थिकनेस ऑफ क्लाउड हियर वुड बी मैक्सिमम एंड तुम जानिछ रेनफॉल डिपेंड ऑन द थिकनेस ऑफ द क्लाउड as we move towards the outer periphery of the tropical cyclone the rainfall comes because of the what thickness of the cloud kami jibo and the cumulonimbus cloud which cloud is that cloud particularly responsible for the formation of the rain that will reduce. So this middle part of the tropical cyclone will have more cloud and resulted into the more rainfall. Okay, tropical cyclones will have some diameter. Let's say the diameter up to 300 kilometer, maximum could be up to the 500 okay kilometer maximum. ताठू अधिक हब ना tropical cyclone रो diameter. Let's say that means हमें जति radius नहीं जीवो ओके तो रेडियस कम रहिबो किंतु आमे जति टेम्परेट साइक्लोन से देखिबा तो डायमीटर टा ध्यान से मानिको तुम ताको रेडियस कर दबनी डायमीटर टा मानिको 500 किलोमीटर जाय रहिबो तमरो है ना तो एतिकी तार इंपैक्ट एरिया टा जोटा हम कहबा दैट इज एमते नहीं कि ऑल ट्रॉपिकल साइक्लोन विल हैव 500 किलोमीटर ज्यादातर 300 किलोमीटर था डायमीटर है ना किंतु जोटा जेमती लेट्स से द सुपर साइक्लोन जोटा 1999 रही थला दैट वाज लाइक 500 किलोमीटर थला है ना तो एमती इंटेंसिटी तार डिपेंड करे फ्रॉम टाइम टू टाइम है ना कोटा केते रहउची जा भी हो तो दैट मींस 300 टू 500 रहबो तुमरो डायमीटर रहबो ओके देन ये तुम कहले इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल विल रिड्यूस जितला में बाहर को जाउचे स्ट्रक्चर दिस रीजन विथ द हाईएस्ट रेनफॉल रहे ए जगह रे जाको हम कहचे इनर रेन बैंड द हाईएस्ट रेनफॉल हाईएस्ट विंड स्पीड कोठी थाए आई वाल रे आई रे न थाए देन से अगेन आई रिपीट आई इज ए काम रीजन पूरा काम कूल एंड मतलब कूल तो नो काम जाको हम कहबा एठी सबले विंड स्पीड अधिक थाए आई वाल रे सब हाईएस्ट विंड स्पीड देखा जिवो देन विंड स्पीड धीरे धीरे बाहर को गले कमिबो wind speed कमिजिवो as we move towards the periphery of the tropical cyclones wind speed बढ़िबो as we move to the center but पूरा center रे wind speed almost zero आई रे है ना पूरा एटारो काम एंड क्लियर ध्यान से मन को एटी स्काई टा कम थाए पूरा क्लियर ये वही सीधा जे तुम देखिबो गोटे छोटिया एरिया थाए पूरा क्लियर थाए स्काई हियर इट विल लुक लाइक दिस हियर यू कैन सी how this structure is looking this is the eye ये रहला eye चारि पाख रही छि एटा हला eye wall ओके चारि पटे घेरी के रही छि इट्स लुकिंग लाइक ए वर्टिकल स्ट्रक्चर है ना पूरा काम थाए ओशन सरफेस पूरा एमते वर्टिकल गोटे वेल स्ट्रक्चर रे तुमको देखा जबो इट्स लुकिंग लाइक ए वेल स्ट्रक्चर पूरा कुओ भले एमते देखा जबो ये जो आई टा रही छि आई चारि पटे फास्ट मूविंग विंड बुलुची एमन को कहा जे आई वॉल धीरे धीरे विंड रो देखो क्लाउड कंसंट्रेशन कमी कमी जाउची बाहर को गले दिस इज सैटेलाइट इमेज तो एथरो हम जानि परबो कि विंड रो स्पीड कमी कमी जो बाहर को आल्सो द क्लाउड ए देखो तुमरो हियर इट इज व्हाट एंटी क्लॉकवाइज एमति तो एंटी क्लॉकवाइज बुलुची है ना एंटी क्लॉकवाइज रो भी बुलुची एमने एमति आछंती इट्स मूविंग लाइक दिस एंटी क्लॉकवाइज रो भी देखा होची ई रो तुमरो आई is so calm ये पूरा calm place रहेगा that even you can landing a helicopter if you wants to land a helicopter तो if some daredevil जो माने अछंती से माने करि परिबे जा भी हो so that is a calm region tropical cyclone हम देखु जे structure देखि देले tropical cyclone रो यदि ये थिला तमरो कोन horizontal parts of the tropical cyclone like what is eye wall inner end band outer end band and last of annular zone आपको कहा जाए ये जो पार्ट दिस पार्ट आर द annular zone पाको रेन शैडो एरिया भी कहा जाए मन को कहा जाए रेन शैडो एरिया हियर द लैक ऑफ रेन एठी बहुत कम रहइबो दिस रीजन विल हैव द रेनफॉल एंड ये जो वार्म ओशन सरफेस करी 27 डिग्री सेल्सियस मन रखिबो है ना एबे आमी देखिबा वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन रो हॉरिजॉन्टल साइकिल देखले देन वर्टिकल स्ट्रक्चर कहले 0 to 3 किलोमीटर माने अल्टीट्यूड देखले 3 to 7 किलोमीटर and onwards up to let's say it would be 16 किछि भी पर जाओ आकु कहा जे inner flow this would be known as the inner flow this would be middle flow this would be outer flow तीन भाग भाग अछि वर्टिकल स्ट्रक्चर फर्स्ट वन अप टू 3 किलोमीटर इनर फ्लो
3 to 7 middle flow, and 7 onwards that would be the outer flow. Okay, तो ये था तुम्हारा vertical structure. So let's move on. Cyclonic wind movement anti-clockwise way, northern hemisphere, southern hemisphere clockwise रहे because of the Coriolis force. हमें पढ़ी थी कि Coriolis force in northern hemisphere everything will get deflected towards its right if that is freely floating, and the opposite left towards the northern hemisphere. ମୁଁ तुमको କହିଥିଲି कि 5 ରୁ 20 କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି 5 ରୁ 30 ଦିଆଯାଇଛି, but 30 ହବ ନାହିଁ. That would be impacted region. Again I repeat, here ମୁଁ ଟିକେ correct କରିଦଉଛି ଯଦି ତୁମକୁ book ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, but that is not correct. 5 to 20 ଯଦି ତମେ IMD ରେ ବି ଯାଇକି IMD site ରେ check କରିବ, it would be 5 to 20 latitude ରେ tropical cyclone formation हुए. Impact area, I am not talking about impact area. Impact area could be up to 30-degree latitudes. Okay, impact area could be vary, but formation area is 5 to 20-degree latitude with a formation way. Impact, let's say something is a system formed. Let's say, for example, I will show here. Let's say the tropical cyclone is formed in this particular region. It will move to this region 30-degree latitude. So ये सेटा होची तारा impacted region, but this is not the place of origin. Place of origin is here. You never heard about the tropical cyclone is forming in this part. Tropical cyclone is forming Sundarban pakhare. You have never heard like this. मतलब I have not heard till now, and neither is going to be. हाँ केबे केबे जदि ग्लोबल वार्मिंग ही गला, ग्लोबल वार्मिंग है कि सी सरफेस चेंज है गला टेम्परेचर, दैट वुड बी डिफरेंट. बट आज ऑफ नाउ the present condition जदि हम देखिबा, it will form 5 to 20-degree latitude. Impacted area could be like this, Japan, let's say the 35-degree, it could be. So that I am not talking about impacted region. Then so that is why it's written like that, up to 30. Then why it's written like 30? Impacted. So average mu तुमको कहतली what would be the जति हमें देखिबा तो average cyclones that can travel 300 to 400 miles per day. तार जो movement से system move कर जाए 3000 miles before it dies. It can move a long distance, it can move long distance and move fast 300 to 400 miles per day move करि परिबो. Structure already हमें देखि देछे. गोटे कहितले मु तुमको आई को कोन कहितले सेंटर ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जोउथरे कि एथरे कहते एटी कोन लिखा छै देखा, नेचर ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्ट्रांग स्पाइरलिंग circulating winds around the center. That center is called eye. That does not means eye is the fast flowing area. आई चारिपटे जो विंड बुलुची दैट इज द फास्टेस्ट. तो आईटा केमती थाए ना, हियर वुड बी क्लियर स्काई. आई वाज टॉकिंग अबाउट फेयर वेदर एंड इट विल हैव द वार्म वाटर सरफेस. ओके, ऑफ द tropical cyclones ro no precipitation experience in this region. We will have the blue sky. Okay, that जेमती हमें देखुतले कि it will structure like a whale. पूरा गोटे whale structure देखा जिवो है ना. पूरा हमते देखियो ता साइड रहबो आई वॉल, that is the fastest rotating wind एठी देखा जिवो. ना मु कहतली लो surface, as I said के I is a intense low pressure region है ना. I होची intense low pressure region, that means temperature अधिक रहबो. So temperature may be 10 degree warmer from the surrounding region. Okay, 12 kilometer altitude जाए जाई परिबो. So that is not matters. The size हमें देखिबा, the eye रो size vary करे 8 किलोमीटर रु 200 किलोमीटर अक्रॉस, बट एते हुए नहीं. साधारणतः 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5, 6, 7, 8 दैट इज मैक्सिमम. सो जदि हमें देखिबा डायमीटर तमे देखि परिबो 30 टू 60 किलोमीटर तुमरो डायमीटर रही पारे. आई रो बिलीव करा जाउची कि 30 टू 60 सेटा हमें लार्ज स्केल रे जोटा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन को टिके बड़ थाए 60 हे जिवो. और लेट्स से ट्रॉपिकल साइक्लोन जदि छोटिया सिस्टम ता देन इट वुड बी 30. सो 30 टू 60 किलोमीटर डायमीटर सिस्टम रखिबो, जोटा कि आई रो हम कहबा सरफेस एरिया. आई वॉल जोटा मु कहतली आई को पूरा लागी कि रहइबो. फास्टेस्ट रोटेटिंग विंड रहइबो, द हाईएस्ट सरफेस विंड इट देखा जो फास्टेस्ट विंड देखा जो है ना. पूरा आई वॉल बा जो वेल टा रहइबो डीप कनेक्टेड रहइबो, पूरा टॉप टू बॉटम रहइबो है ना. कंपासेस द फेयर स्लोली श्रिंकिंग. एथरे कोन छे जस्ट मु एटी आगे देखि दउची त आउथरे स्ट्रक्चर टा को. Here you can see
the eye wall जोटा कि तमरो fast rotating air mass that is also moving off but ता सहित कौन हुए ना ता सहित किसी air descent भी करे for example if I am having let's say no figure is here so ठीक अछि now एटी गोटे जिंस खाली मु मेंशन कर दउची ये जो राइजिंग एयर मास अच्छी लेट्स से एयर इज राइजिंग दैट साइड रे कोन करे एयर एमती डिसेंड भी करे लेट्स से एयर हियर इज राइजिंग हियर इज डिसेंडिंग हियर इज राइजिंग द क्लोज रे कोन डिसेंड करिवो एवरीवेयर एयर इज राइजिंग एंड डिसेंडिंग एमती देखा जिवो दैट मींस हमें तो आई वॉल अछि क्लोज टू द आई वॉल एंड ओवर द आई आल्सो एयर डिसेंडिंग एयर टा कोन एठी डिसेंड करे आई वॉल रे एयर असेंड करूची बट आई over the eye that close to the eye wall I will say the air is descending okay air kon karuchi descend karuchi then so air is moving off and some airs are moving down so those air which is coming down because here would air move kala pare kon hijibo cool hijibo it would be cool again so cool he gala pare something will again come back hana it will try to subside if it subside karuchi here the air is subsiding जेतरो एयर टे तळको आसुची कोन कहतिले मु ऑटोमेटिकली कोन हिजबो 10 डिग्री टेम्परेचर प्लस हिजबो ना ऊपर को गले टेम्परेचर कमे तळको आसले टेम्परेचर बढ़िबो ऑटोमेटिक सिस्टम रे जे देखिबा सो द टेम्परेचर विल इंक्रीज इन दिस पार्ट ऑफ द सरफेस ए सरफेस एरिया रे टेम्परेचर कोन हिजबो बढ़ी जिवो so that is why this descending wind close to the air that is the eye wall they are but making this particular region or the eye surface of the eye or maintaining the heat or the particular temperature in this region they are able to maintain the temperature so that the low pressure will be written as a low ना बुझा पड़लानी काहू किछि मु कहली जो एयर टा डिसेंड करूची तमरा आई ऊपर और क्लोज टू द आई वॉल दोस एयर इज डिसेंडिंग दो हियर इट्स नॉट मतलब coming in the picture तुमको देखा जाओनी let me send a picture in the group from the Google so that you will have the clear view good minute see group report है देसी तमरो केमती wind गुडा descend करूची है ना how wind is descending तो ये जो descend करूची that descending wind है ना इधर बहुत गुडा इमेज अछि तुम जाकी इमेज गुडा देखि परिबो that descending wind कोन करिवो that will create so wind जेतरा descend करे मु कहै टेम्परेचर बढ़ाइबो so descending wind रो इंपोर्टेंस बहुत अछि ट्रॉपिकल साइक्लोन आगो को डिफिकल्ट क्वेश्चन आसीबो तनको पछारे परे कि आई जो काम द calmness of the eye how that is maintained or what the reason for maintaining the calm region or the formation of the calm because of the descending of the wind जो wind ता descend करूची तादरा एठी जो water surface temperature is that would be sustained let's say the 27 or the 28 degrees Celsius that would be written then तण करके जो descending wind रो काम तमरो एमती आसीबो so here we will that is why I am talking about कि descending wind टा कोन करे एठी descend करिवो surrounding region रे है ना तो wind तमरो descend करिवो आई वॉल रे कोन करिवो wind टा descend करिवो so आई वॉल तुम देखो फास्टेस्ट कंप्रेशनल विंड एटा जोटा मु थले ऑटोमेटिक कंप्रेशन रहबो जाको कहजे सबसाइडिंग विंड तळको आसुची कंप्रेशनल इफेक्ट देखा जिवो तादर टेम्परेचर बढ़िबो so that it will what maintain the heat of that particular region ocean surface रे heat up maintain रहबो cloud formation of a cumulonimbus cloud cumulo कहले कोन पेंथा cloud कहजे cumulo nimbus कहले कोन those are the dark cloud dark and brown color cloud थाए and जो माने कि अल्प देखिबो केबे केबे मानसून जेतल आसे ना अल्प हाइट रे हमको क्लाउड देखा जाय
है ना पूरा अल्प हाइट क्लाउड गुड़ा देखा जाए से जो अल्प हाइट जो क्लाउड देखा जाए दे आर द क्यूमुलर निम्बस क्लाउड दे विल बी लुकिंग द ग्रे कलर देखिबो तुम कोन देखा जाए ग्रे कलर रे देखा जिवो माने कलरटा रे ब्राउन सॉरी ब्राउन कलर दे वुड बी ब्राउन टू ग्रे रहिबो ब्राउन टू ग्रे कलर देखा जिवो एंड थिकनेस ए क्लाउड अधिक रहिबो है ना क्लाउड पढ़ाई देबी तुमको है ना क्लाउड कहि देबी तो से क्लाउड रे आसीबो तुमको अधिक रेनफॉल हेता है से तुमको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड को आ जाए ड्रिफ्ट इन दिस रीजन तो ये रीजन रे सिंपल ट्रॉपिकल साइक्लोन रो सब प्रकार क्लाउड देखा जाए देन वर्टिकल स्ट्रक्चर मु तुमको कहि देथली वर्टिकल स्ट्रक्चर रे 0 to 3 है ना 0 to 3 देथली 3 to 7 और 7 रू ऑनवर्ड्स अप टू 12 है ना तीनटा पार्ट डिवाइड करथली 0 to 3 like this is the vertical structure what है inner flow जोटा कि हमर lower level then middle layer then outer flow done this one है ना ये तो कह दी ऑलरेडी ये रहबो तमरो vertical structure of the tropical cyclone then tropical cyclone रो category A रे कोन आसे जोने wind speed 90 to 125 रहबो B आसीबो that is the destructive this would be gale 125 to है ना A आसीबो तमरो tropical cyclones then as for severe tropical cyclones up to 200 150 to 200 that would be severe tropical cyclones very destructive this would be like this and the severe tropical cyclones जदि हम देखिबा है ना हम देखिबा जाको 5 कैटेगरी 5 रे आसे जार 280 है ना जाको सुपर साइक्लोन बोली कह जाए एमन को कह जो सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स 250 क्रॉस कले सेमन को कह जे सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोली कह जाए जेंति सुपर साइक्लोन कह जाए 1999 रे आस्तला ना जो सुपर साइक्लोन आस्तला सेतमे दाउ कह जाए कि 250 को क्रॉस कले ताको सुपर साइक्लोन बोली कह जाए these are the category wind speed then favorite breeding ground for the tropical cyclone a tropical cyclone कोठी भी ऑलरेडी हम कह दैछे लाइक तुमको कैरिबियन सी रे देखा जो फिलीपींस देखा जो ईस्टर्न चाइना बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी मेडागास्कर ऑस्ट्रेलिया जोठी विली विली कह जाए दिस आर द रीजन है ना बट डज नॉट हैव ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एटी फॉर्मेशन हो नहीं साउथ अटलांटिक ओशन ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन हो नहीं दिस इज द दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज so many times asked a question pachara jay the southern part here you can see also that this part does not have tropical cyclone why because of the cold water or the cold current ए reason रे हमको कोन देखा जाय cold current देखा जाय कारण हमको दरकार water temperature केते 27 degree और let's say here is cold current here is cold current here is Peruvian cold current here is Falkland what that is the हमको कहबा के ईस्ट ब्राजीलियन कोल्ड करंट एठी देखा जाय पाल्क करंट देखा जाय पाल्क लैंड एठी पाल्क स्ट्रेट अछि पाल्क पीएल सॉरी that is what sorry that would be Falkland जोटे की करंट देखा जाय एठी अछि है ना सो तण बिकॉज़ ऑफ द Falkland current एठी से करंट देखा जाय कोल्ड करंट देखा जाय है ना सो दैट पर्टिकुलर कोल्ड करंट जोगु ए रीजन रे एठी दे तुमको बेंगुएला कोल्ड करंट है ना तो एठी देखा जो तुमको फॉल्कलैंड कोल्ड करंट एठी देखा जाए एंड हियर वुड बी हमको बा को कह जे ब्राजील अर्जेंटीना कोल्ड करंट बोली कह जे एठी देखा जो तुमको बेंगुएला कोल्ड करंट ए कोल्ड करंट ए रीजन रे डोमिनेंट करके रखी जे कोल्ड वाटर हियर वुड बी पेरू चिले कोल्ड करंट एटी पेरू चिले कोल्ड करंट तेणु करी कोल्ड वाटर हेले ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन हे परिबो नाही दैट मींस को रीजन रे इफ एनी रीजन इज एक्सपीरियंसिंग मोर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दैट इज ऑट टू बी द ग्लोबल वार्मिंग ताले हमको जणा पड़िबो दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग सी सरफेस टेंपरेचर बढ़ुची और नंबर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन बढ़ुची सेति पे जदि नंबर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन बढ़ुची दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग डन एवरीवन तो ये रहबो काहे के एठी फॉर्मेशन होनी that is because of the cold current in this region here is the cold current here is cold current here is cold current so this is the factor here ये तो already हमें देखी थी कोठी को नारे जोना जे tropical cyclone characteristics of the tropical cyclones size and shape obviously size हमें देखी थी जे केते रहबो तुमरो जदि हम देखि दो elliptical जो shape टा एमति रहबो ना दो आर path asymmetrical तो सेमती किछि सिमेट्रिकल तो न थाए ये एसिमेट्रिकल थाए एमते नै कि पूरा कॉइल्ड शेप रे थिबो है ना ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आमी कहबा विल हैव सिमेट्रिकल एलिप्टिकल केतरे जस्ट करेक्ट मी ये सिमेट्रिकल रहबो एसिमेट्रिकल न सिमेट्रिकल केन एमती शेप रे बुलुची ये सिमेट्रिकल रहबो एसिमेट्रिकल न
है ना जहाँ भी हो रेशियो देखो केते रहबो तमरो 2 दैट मीन्स हम देखबा 2:3 रेशियो रे दैट मीन्स देखा जबो जोटा कि लेंथ एंड ब्रीथ हमें कहबा लेंथ टा सब बड़े कम रहिबो एंड ब्रीथ टा अधिक रहउजी 2:3 डीप प्रेशर ग्रेडियंट देखा जबो तुमको एंड कॉम्पैक्ट साइज रहबो साइज टा 80 किलोमीटर नियर द सेंटर धीरे 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 300 किलोमीटर ये डेढ़ एटा लिखा है जो ये जो 1500 लिखा है 1500 असंभव कथा दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल तेणु आपको तुम्हें लिखबो नहीं सेटा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन रे देखा जाए this would be up to 500 kilometer this is not 1500 लिखि दबनी भूल हो ओके डन ये 1500 कहले ओडिसा रे जदी फॉर्मेशन होछ गुजरात रे जाई पहुंची जीवो से बुझ परछन एतिक डिस्टेंस कवर करि परिबो से सो दिस इज नॉट करेक्ट तेणु याको पूरा कंप्लीटली रॉन्ग तो बस तुम मन रखो कि 300 टू ये 500 मैक्सिमम जदि हम देखिबा कि लेट्स से ट्रॉपिकल साइक्लोन इज हिटिंग द पुरी कोस्ट और द केंद्रापड़ा कोस्ट द इंपैक्ट वुड बी फेल्ट अप टू संबलपुर इंपैक्ट कोले विंड स्पीड रहबनी रेनफॉल हबो दैट वुड बी तो दैट इज डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ड्यूरेशन वगैरह 1500 के लिखिबनी विंड वेलोसिटी हम देखि दिछ अप टू 300 हे परे 280 हे परे 500 किलोमीटर हे परे तुम के 1200 किलोमीटर अरे 1200 किलोमीटर हे परे आ किछि रहिबो तो दुनिया से बिल्डिंग भी रहिबनी हो तो दीज आर बट एग्जैगरेटेड लाइक दिस है ना तो मु एमते किछि लिखिबो नै एग्जैगरेटेड पता नै एमती कोठी कोठी लिखा होछि सो डोंट वरी हेतमे मु करेक्ट कर दिए बट स्लाइड रे जोठी जोठी भी भूल रोछि ताको करेक्ट कर दबो जंती कि कहले आको 1 को हटे दियो यार बोटी भी लेट्स से आपको खत्म कर दियो मैक्सिमम हे परियो केते लेट्स से अप टू 300 है ना ये रहबो तुमको 300 हमको देखा जीवो ओके देन लैटिट्यूड तो मु कहि दैछि 20 डिग्री है ना तुमको कहा जायछि कि 20 डिग्री जाय रहबो फॉर्मेशन टा स्ट्राइकिंग पॉइंट 30 डिग्री हे पारे सेथरा हमर किछ कहया नै पैराबोलिक पाथ थाए पैराबोलिक पाथ कहली आर जो मूवमेंट टा सपोज ट्रॉपिकल साइक्लोन टा एंड सी रे मूव फॉर्मेशन हला तार मूवमेंट किंतु एमिति रहबो ये स्ट्रेट मूव करेनी मूव कला बेले एमिति पैराबोलिक पाथ रे हाफ सेमी सर्कल पाथ रे से मूव करे ओके जा को पैराबोलिक पाथ कहूचे आ कोरियलिस फोर्स तो तुम जानि छो जेमति कि फॉर एग्जांपल हियर आई विल शो यू ये देखो पैराबोलिक पाथ रे जाउची केमिति फॉर एग्जांपल एठी फॉर्मेशन हैला ये तार पैराबोलिक पाथ रे एमिति मूव कला बळ ओडिसा को स्ट्राइक कला ये तार एमिति मूव करूची पैराबोलिक सोले पैराबोलिक पाथ रे जाउची देखो ये भी पैराबोलिक एमिति स्ट्रेट जाय एमिति स्ट्रेट से जीवन नाही है ना अदरवाइज जदि स्ट्रेट जाइथंता तले तमिलनाडु कुड हैव बीन द आई वुड से द highest or the number of tropical cyclones could have strike more here in पूरा स्ट्रेट अछि अंडमान निकोबार किंतु अधिक हमर स्ट्राइक होछि कोठी सुंदरबन ओडिसा कोस्ट रे तो कारण बिकॉज ऑफ द पैराबोलिक पाथ बिकॉज ऑफ द पैराबोलिक पाथ तुमको पैराबोलिक पाथ काहे कि होछि बिकॉज ऑफ द डिफ्लेक्शन ए जतरा मूव करूछि ताको डिफ्लेक्ट कर जो डिफ्लेक्ट हे ही धीरे 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 तार पैराबोलिक पाथ रे सो फॉर एग्जांपल हियर इट्स एडी फॉर्मेशन होछि आर पैराबोलिक पाथ रे से आसी कि एठी पहुंची जीव नॉले से डायरेक्ट एठी तमिलनाडु पहुंची थांता जदि शार्प पैराबोलिक पाथ हेकला म्यांमार आसे केमति स्ट्राइक करिवो किंबा से कोन करिवो बांग्लादेश रे सेति पई पैराबोलिक पाथ रे ओडिसा आसी जाउची तार एरिया रे पूरा से रडार जोन रे सेति पई ओडिसा होची जदि ओडिसा को स्ट्राइक करूची कोन पई बहुत थर मुकुची कारण प्रथम कथा तो 480 किलोमीटर लॉन्ग हमर कोस्टल लाइन होची ओडिसा ओडिसा 17 रु 22 डिग्री भितर आसुची 17 रु 22 डिग्री जोटा कि गोटे आमे कहबा फर्टाइल लैंड फॉर द स्ट्राइकिंग ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन कारण आमे जानचे 5 रु 20 व्हाट डिग्री भितर फॉर्मेशन हबो आउ तार इंपैक्ट एरिया 30 आ ओडिसा पूरा रडार जोन रे आसुची तेन करी एठी जोडा फॉर्मेशन हबो ए तीनटा कंडीशन 1 हमर लॉन्ग कोस्टल लाइन अछि देन लोकेशन 17 रु 22 डिग्री अछि या आउ ट्रॉपिकल साइक्लोन रो रडार जोन रे आसुची प्लस पैराबोलिक पाथ अछि प्लस हमर डेल्टा रीजन अछि बहुत सारा रीजन अछि काहे कि और भी रीजन अछि जेंति कि डेल्टा कोस्ट एठी देखाउ छै ना टिके बाहरी के रहला बडे लैंडटा तो बाहरी के रहै छै ये जेतरा मूव करे ऑब्वियसली एठी स्ट्राइक करिवो तो ए सब रीजन हम देखिबा जेतरा ओडिसा ज्योग्राफी कवर करबी बाकी मु सेतरा आ किछ वैलिडेशन कर देबी ओके सो दैट इज व्हाट ट्रॉपिकल साइक्लोन ओडिसा कोस्ट को हमको अधिक देखा जबो है ना तो साइज विंड वेलोसिटी पाथ हमें देखितले पाथ टा सब बळे कोन थाए पैराबोलिक थाए ये तो रोटेट करे मूव करबा ईस्ट टू वेस्ट को मूव करे साधारणतः ये कोन करे हमें कहबा साउथ ईस्ट डायरेक्शन रो नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट को मूव करबो सॉरी नॉर्थ वेस्ट को मूव करे पैराबोलिक पाथ रे मिति
मूव करी करी जाए और 30 डिग्री लैटिट्यूड जाए ये इंपैक्ट करि परिबो. Here you can see some of the important tropical cyclones रो ना दिया है जेमती ताउते आसला तुमरो 2021 रे है ना जोटा कि हमरो वेस्टर्न कोस्ट को अम्फान तुम जानिछो है ना निसर्ग भी आसला निभार आसला एमती फानी वगैरह 2019 रे फानी आसला हिक्का जो किसी दिया जी तितली फितली जो दिया जी तुम जहाँ भी हो छोटा छड़ दियो एबे रिसेंटली जेमती तुमरो अम्फान आसला है ना 2020 रे अम्फान 21 रे ताउते. अच्छा लास्ट ईयर कोन कोन ट्रॉपिकल साइक्लोन आसला इफ यू कैन नेम्ड एनी वन ऑफ देम. यस कोन आसला यस आस नथला कोडी आसला व्हिच रीजन वाज स्ट्राइकिंग पॉइंट कोडा थिला भद्रक isn't it बालेश्वर भद्रक वाज द स्ट्राइकिंग पॉइंट जोटा. ओके तो ये रहला हमर ट्रॉपिकल साइक्लोन. ओके ट्रॉपिकल साइक्लोन ये रहो तो ट्रॉपिकल साइक्लोन रो फॉर्मेशन पे कंडीशन आउट थरे मो एठी कहि दोची. ट्रॉपिकल साइक्लोन रो फॉर्मेशन पे कंडीशन कोन दरकार है ना एठी लेखा हेनी तुमरो कंडीशन एक्चुअली जेतर मो ओडिसा ज्योग्राफी पढाइबिन कि सेतेबेले आउ टिके डिटेल रे पढिबा. द कंडीशन कोन दरकार जेमति मो कहली आगे दरकार तुमरो वार्म वाटर 27 डिग्री सेल्सियस प्लस जहाँ भी ही परे. सी सरफेस हम दरकार जो सी सरफेस जो वार्म वाटर टा थिकनेस केते रहबा दरकार 50 टू 80 मीटर. ताले ए जो वार्म वाटर अछि रीजन रे तार थिकनेस टा रहिबो. देन कोरियलिस फोर्स रहिबा दरकार बहुत इंपोर्टेंट. बिना कोरियलिस फोर्स रे रोटेशन ही परिबो नहीं फॉर्मेशन. देन आउ कोन देखो ना वीक आमे देखो वीक शियर फोर्स विंड रो वीक शियर फोर्स रहिबो. वीक शियर फोर्स माने कोन लेट्स से विंड रो वेलोसिटी इज लैटिट्यूड रे जदी हाईली वेरिएशन रहिला सपोज भाबो 1 किलोमीटर सी सरफेस रो 1 किलोमीटर एबव रो विंड स्पीड होची 30 किलोमीटर 2 किलोमीटर रे सेटे 60 किलोमीटर एमती विंड स्पीड जदी ऊपर गले बढ़ुची दैट मींस शियर फोर्स अधिक अछि. अधिक शियर फोर्स ले कोन हबो क्लाउड फॉर्मेशन ही परिबन ना. सपोज मॉइस्चर टा गला सी सरफेस रो 1 किलोमीटर ऊपर को 2 किलोमीटर ऊपर को जेतेल जो सेटा डाइवर्ट हे जिवो सेठी से रहिले सिना मॉइस्चर टा क्लाउड फॉर्मेशन हबो साइक्लोन फॉर्मेशन रे हेल्प करिवो. तेनो शियर फोर्स टा वीक दरकार हमको वीक शियर फोर्स. ओके तो वीक शियर फोर्स दरकार कोरियलिस फोर्स दरकार. सी सरफेस जो हमर वाटर थिकनेस टा मु कहली तुमको वाटर थिकनेस 50 रो 80 मीटर दरकार. वार्म वाटर दरकार. आउ कोन ना आउ कोठी बे ना लैटिट्यूड तो जानि 5 रो तमरो 20 डिग्री लैटिट्यूड भीतर फॉर्मेशन हबो. ते ज्यादा कंडीशन हमको ट्रॉपिकल साइक्लोन रो कोरियलिस फोर्स तो रहिबो. सो दिस आर द आउ कोन प्रेजेंस ऑफ आइलैंड जेमति अंडमान निकोबार सबले आइलैंड अछि एठी भी लैक्सेद्वीप आइलैंड अछि तो आइलैंड सहित आर रिलेशन भी अछि. तानु करी हम देखबा दिस वर द कंडीशन ये रहला ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव करि परिबो. आउ खेती कोन हेबो लेट्स से तो पाजे इंपैक्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन. इंपैक्ट कोन ऑब्वियसली हम कहबे इंपैक्ट तो सब लेट्स से इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो एग्रीकल्चर डैमेज हो लॉस ऑफ लाइफ वाइल्ड लाइफ नेचुरल इकोसिस्टम सब ऊपर डैमेज पकेबो. हां जदी सेटा साइक्लोन हैला सेटा जदी गोटे सिंपल हम कहबा डिप्रेशन रे कन्वर्ट हे गेला ताले सेटा खाली रेनफॉल करेबो. विंड स्पीड जदी कम रहला खाली रेनफॉल कहबो से रेन वाटर टाको हम हार्वेस्ट कर यूज कर परिबा. ओके तो टाइम हमें ट्रॉपिकल साइक्लोन रो मो स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर देली गोटे गोटे स्ट्रक्चर तार टाइम कोन फॉर्मेशन आ जदी तुमको इंपैक्ट तुम निजे भी लिखि परियो के जेमति कोस्टल इरोजन हे जिवो अधिक फ्लड ही पारे अधिक रेनफॉल हेले कोन फ्लड हे जिवो विंड स्पीड रहबो गच्छ भांगी जिवो एनिमल्स माने मरि जिवो बर्ड्स माने मरि जिवे. देन फिशरमैन माने ता से माने फिशिंग करि परिबे नाही फिश किछि बोट पे बुडी जाय साइक्लोन आसेले जदी से मानको अवेयरनेस न अछि और दे डिफाई द अथॉरिटीज रो वार्निंग दिया जाए ना कि तुम माने पळे आसो फिशरमैन को साइक्लोन फॉर्मेशन हबो जब भी लॉस तो बहुत सारा तुम लिखि परिबो ऑब्वियसली इंपैक्ट रे आगे नहीं. अब बाकी रहला ओडिसा रे काहे के पहुंचे मु तो किछि कहि दै छी बाकी ओडिसा ज्योग्राफी जेतरा हम पढियो से तो कवर कर दो डोंट वरी. So this much for the tropical cyclone. है ना इतला tropical cyclones. Anyone is having doubt? कार किसी doubt?